Hello friends, I am Gaurav Marwaha, the director of Unique IAS Study Circle, and today again I am back with a very important and crucial aspect of your preparation, and that aspect is how to improve answer writing skills for mains. My friends, answer writing skill is crucial for any competitive exam, including the UPSC, the state PSC, or any competitive exam in which there is a subjective paper. As you know, UPSC and the state public service exams are in three stages: the pre, the mains, and the interview. So, especially answer writing skills are crucial for the mains, and up to an extent, they also affect your interview aspect. Because I believe that if you express yourself precisely through your pen, you have proportionately chances of expressing your views orally also. So it's very crucial to have good answer writing skills. Dear students, very often it is seen that even the students with great and tremendous knowledge fail to qualify in the mains test. Although number of times they crack the prelims exam. Then the basic reason is either they are not blessed with the answer writing skills or they do not work hard to increase and inculcate this skill. Dear friends, the good answer writing skill can be a blessing, it can be a talent, but at the same time you can achieve it hard as one can achieve other skills. तो ऐसा नहीं है आंसर राइटिंग स्किल अगर जन्मजात है तो किसी दूसरे को अगर जन्मजात नहीं है तो वो नहीं सीख सकता. जैसे कोई स्किल होती है वैसे आंसर राइटिंग स्किल भी अप टू एन एक्सटेंट आप इम्प्रूव कर सकते हो. So whatever answer you write, before writing that answer, you should be analytical, well framed, systematically arranged in your life, in your thinking, and that will be reflected in your answer writing. Once you do the answer writing part. So by this blog of Unique IAS, I'll try to navigate you for the UPSC and the state civil services mains so that your journey should be a short journey and a successful journey so that you can crack the civil services exam in one shot. Dear friends, in the mains there are following papers which require the answer writing skills. Like there is a paper of mains essay, and in GS there are 4 papers, and in optional there are 2 papers. So in 7 papers you can say answer writing has great role to play. I'm not discussing about English and the regional paper because they are just qualifying in nature. So the mains in civil services consist of 1750 marks, and that is very crucial for your final selection because prelims is only the qualifying exam. So in UPSC you are provided with a QCA and you have to write your answer within that given space. So in UPSC website you can download that QCA, or even in the website of Unique IAS that QCA is given. So you should practice answer writing in the UPSC QCA format only. And if you are appearing in the state PSC, so you should try to know that what kind of answer sheet they provide, whether that is a line or not a line one, and accordingly you should do the answer writing practice. And in UPSC mains, in 180 minutes, that is 3 hours, you have to write around 4000 to 4500 meaningful words. तो लगभग 3 घंटे में, लगभग 180 मिनट में आपको 4-4,500 वर्ड के करीब लिखने पड़ते हैं आपको. So the most I can say कि you have for 10 marks you have to write 150 words in approximately 7 minutes.
So right from the beginning you should target to write your answer within the stipulated word limit, within the stipulated time. And for writing you should have a thorough knowledge about what is the trend going on. So always go through the previous year question papers of at least 5 years. They will give you a knowledge about what is the current trend, and based on the experience of the previous 5 years you can extrapolate that in the coming year which in which you are appearing, what could be the trend. So not only you should write on static part, but you should also extrapolate that in the coming year what kind of questions can be asked, and right from beginning you should do the answer writing on those subjects, so that in whatever exam those questions are asked, so you need not to think much, automatically by default you should able to give answer. And my dear, in answer writing you should go subject wise preparation, module wise, like write some answers on history, modern history like national movement. So write some answers on culture, polity, economics, environment, current affairs. So write answer subject wise. And once you have inculcated this habit, then you mix up, like one answer you write in history, one answer polity, one answer write in economics. So this is how in second stage you should mix up the answers. So that is a good practice. And before going for the answers, always go over the standard books. Like in Unique IS Study Circle, we have a lot of standard modules on modern history and economics, geography, environment, current national affairs, international affairs. They will give you a thorough knowledge. And in a Unique IS Study Circle on our website, you will find a blog. You will find a button on current affairs that also provides you good opportunity to get good material for the answer writing. And in our website there is a button of answer writing challenge. So those students who write best answer, we publish their answers on our button. The name of the button is answer writing challenge. And whenever you study, you should not only study from the reading point of view. Whenever you study, you should study with a perspective that today you are reading, but you have to also write it also, and one day you have to debate it also, because reading simply imparts the knowledge. If you write your answer, it will make you precise, and if you debate, you become a ready man. So whenever you read, you should read it with the perspective you have to write answer, you have to debate on that, because civil services is a game of the combination of the three: the reading, the writing, and the debating. So whenever you start your preparation, you should mind about your answer writing within the stipulated place, within the limit. And while answer writing, always remember the W's, like whatever subject they are asking in the question, what has been asked, what, when it happened, why, why it happened, where it happened, and how. This time the W comes in the and how. So always remember the W's, the 4 W's: what, when, why and where, and another the 5th W, the how. तो इन चीज़ों को आप याद रखोगे तो आंसर राइटिंग में आपको मदद मिलने वाली है. And dear friends, before start writing, make a skeleton. If you make a skeleton, you can write a better answer. Like what will be the different headers in your answer, what will be the subheaders, and inside those subheaders what will be the bulleted points or what will be the numbered points. तो मित्रों, जब आप आंसर लिखना चालू करें तो उसके पहले मन में एक स्केलेटन बना ले कि इसके मुख्य शीर्ष क्या होंगे, मुख्य शीर्ष के अंदर अन्य शीर्ष क्या होंगे, और उन शीर्ष के अंदर या तो आप नंबरिंग करके लिखें या बुलेट्स भी बना सकते हैं, हालांकि नंबर करके लिखें तो बेटर है. एंड इन आंसर राइटिंग यू ट्राई टू इनकलकेट द नंबर ऑफ डायग्राम्स, वन डायग्राम्स. तो जितने भी आप डायग्राम दे सकें, फ्लो चार्ट दे सकें, वो अच्छा रहेगा आपके आंसर के लिए. और किसी भी आंसर में अगर इम्पैक्ट पूछा जाए तो यू शुड ट्राई टू थिंक इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, और इट्स इम्पैक्ट इन आवर कंट्री, इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोब. तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रखें. एंड ऑलवेज राइट विद इन द वर्ल्ड लिमिट.
and try to extrapolate that in the coming year what topics can figure. तो उनको हमेशा ध्यान में रखिए कि क्या टॉपिक आ सकते हैं, उस पर खूब आप आंसर राइटिंग करिए. And once along with the answer writing, you should also improve your spellings, tenses and grammar in whatever medium you have chosen. आप हिंदी माध्यम में हो या अंग्रेजी माध्यम में हो, जिस भी माध्यम में हो, आप उसमें इतना ज़रूर करिए कि आप बड़ा सिंपल वर्ड्स को यूज़ करिए. ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा कटपिट नहीं होना चाहिए. And while answer writing, your handwriting should be beautiful. It's very good. If it is not beautiful, at least it should be a smart work. It should not be a overcrowded and a slum type of work. तो जब भी आप लिखें तो प्रयास करें साफ़ सुथरा लिखें, अच्छा लिखें, खूबसूरती से लिखें, जिसको मैं यूँ कहूँगा कि सीरत के साथ सूरत भी आपके उत्तर की अच्छी होनी चाहिए. Along with the content, the face value of your answer should be good. And always get your answers reviewed by the experts. तो हमारे यूनिक में बड़ी अच्छी फैसिलिटी है. We try to check the answers and we suggest our students how they can improve. And now I'm giving you a live example. Like there is a question in civil services. Indian sculpture has mastered the art of metal, terracotta and stone carving over a long period of time. Discuss. यूपीएससी का ही ये एक उसके लिए प्रश्न है कि जो इंडियन स्कल्पचर है इसने मास्टर्ड किया हुआ आर्ट ऑफ मेटल, आर्ट ऑफ टेराकोटा एंड स्टोन कार्विंग, इसको डिस्कस करना है. तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में इतने पार्ट तो होते ही हैं, द इंट्रोडक्शन, द मेन बॉडी, द कंक्लूजन. तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें आप यू शुड अंडरलाइन ऑन दीज क्वेश्चंस. लाइक इन दिस क्वेश्चन, instead of underlining, I have changed the colors for your benefit, but in actual paper you have to underline. You can easily underline your questions like art of metal, art of terracotta and stone carving. आपने तीन चीज़ को अंडरलाइन कर दिया ना, आपके आंसर के कि मेन बॉडी में ये तीन पार्ट हो गए. Look, this is the question. Indian sculpture has mastered the art of metal, terracotta and stone carving over a long period of time. So dear friends, this is the answer of one of the topper of IAS. ये देखिए इन्होंने जैसे मैंने डिस्कस किया, ये इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है बहुत खूबसूरत. फिर दिस इज़ द मेन बॉडी. इन मेन बॉडी देर आर थ्री पार्ट्स और देखिए इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ आर्ट ऑफ मेटल, टेराकोटा एंड स्टोन कार्विंग. आर्ट ऑफ मेटल, टेराकोटा, स्टोन कार्विंग. तो एक इन्होंने देखिए आप लिखा है आर्ट ऑफ मेटल पे, देखिए लिखा है और डायग्राम बनाया खूबसूरत सा. देन आर्ट ऑफ टेराकोटा, देन आर्ट ऑफ कार्विंग एंड उसके बाद इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया हुआ. तो ऑब्वियसली ये टॉपर हैं तो इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने आंसर को स्ट्रक्चरली एंड फेस वैल्यू वाइज एंड कंटेंट वाइज बहुत अच्छे वे में पेश किया है. डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. आई नो ए बॉय एट द एज ऑफ 21 ही वांटेड टू बिकम एन IAS. At the age of 21 he wanted to become an IAS, but at the age of 25 when he could not become IAS he tried to become deputy collector. Age of 25 when he could not become IAS he tried to become a deputy collector, and at the age of 30 when he could not become deputy collector he wanted to become a tehsildar. And dear friends, even at the age of 31 32 now even he could not become a nayab tehsildar. तो जो 21 वर्ष में जो IAS बनना चाहता था वो 30-32 साल का हो गया लड़का और वो अभी नायब तहसीलदार भी नहीं बन पाया. तो उसका क्या कारण हो सकता है? सो द रियल रीज़न इज, although he has done all the hard work, although he has ample of knowledge, but dear friend, the real reason is he actually lacks the answer writing skills. तो dear friends, आप आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छा रखेंगे तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं समय पे. सो इन योर क्वेश्चन देर आर समथिंग डिमांड्स टू इल्यूसिडेट और एलैबरेट और एक्सपांड, एग्जाम्प्लीफाई. तो इस तरह के क्वेश्चन जब दिए होते हैं इनमें कई में पूछा जाता है इल्यूस्ट्रेट करिए या एक्सपांड करिए, तो इसमें क्या आपको अप्रोच रखनी है, इस बात पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो दीज आर मोर और लेस सिमिलर वर्ड बट नॉट दे आर द एग्जैक्ट. यानी ये समानार्थी तो हैं लेकिन एकार्थी नहीं है, इनके अर्थ अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं.
If you are asked to elucidate, that means you have to make the things more clearer and sharper by examples. तो जब भी आपसे पूछे इल्यूस्ट्रेट करना है, मतलब अब आपको इसको स्पष्ट करना है, बहुत सारे आपको उदाहरण देने. एंड इफ़ यू आर आस्क्ड टू इलेबरेट पूछा जाए तो अब आपको इसका मतलब है कि डिटेल्ड इसके एक्सप्लेनेशंस देने हैं. एंड इफ़ यू आर आस्क्ड टू एग्जाम्पलीफाई, दैट मीन्स आपको इसके टिपिकल एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे कैटेगरी वाइज, जिससे आपसे जो पूछा गया है वो चीज़ क्लियर हो सके. सो इल्यूसिडेट मीन्स you have to make it clear by examples. Elaborate means you have to give the detail. And exemplify matlab now you have to give the examples of different categories. And if you sometimes you may be asked to enumerate, so enumerate, so it is you have to now make the things clear one by one. तो जब भी आपसे इनैमरेट पूछा जाए तो मतलब आप धीरे धीरे करके उसको डिफाइन करिए, मेंशंस थिंग वन बाय वन एंड मेक इट क्लियर. और जब भी आपसे ओपिनियन या कमेंट पूछा जाए या व्यू दी जाए तो फिर आप अपना उसमें ओपिनियन रखिए, और आपका जो ओपिनियन है ट्राई करिए ऑप्टिमिस्टिक हो, फिर फुल ज़ील हो उसमें, बिकॉज इट शोज़ योर एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी. And if they ask you narrate, तो in narration you have to explain that chronologically. तो narrate पूछा जाए तो आपको chronologically explain करना है. And sometimes they may ask you to discuss. So in discuss you have to write whatever you know about that one after another. तो discussion में आपको एक के बाद एक जो आप जानते हैं उसके बारे में आपको बताना है. If they ask you to justify the answer, that means you have to write in favor, the favorable things. And if they ask you to define, then you have to give the definition of part. If in UPSC question, if they ask you to assess or examine or evaluate, so that means now you have to explain. Few points you have to write in favor and few points you have to write against. तो जब से आपसे पूछे एवेल्युएट करें, यानी मूल्यांकन करें, एग्जामिन करें, तो एग्जामिन करें यानी उसका परीक्षण करें, तो आपको कुछ पक्ष में भी लिखना है, कुछ उसका विपरीत भी लिखना है, कुछ कमियां भी लिखनी है. तो ये कुछ, और व्हेनेवर दे आस्क टू एनालाइज द आंसर, तो इसका वही मतलब है जो एवेल्यूएशन का है. तो इसमें आपको गुण दोष दोनों देने हैं एनालाइज में. And when they ask to illustrate the answer, that means you have to make it more clearer and more visible by making certain data, diagram and charts. तो illustration में आपको illustrate करना है, इस चीज़ को बहुत स्पष्ट करना है, और उसमें स्कोप है कि बहुत सारे आप अपने डाटा को आप डायग्राम्स, चार्ट्स के सहायता से क्लियर कर सकते हैं. And in UPSC whenever they ask to describe it, so that means now you have to use your knowledge to explain that thing. You have to write its constituents, characteristics and attributes in describe. If they ask you to critically examine, so obviously in critically examine you have to evaluate the thing from both of the angles, pros and cons, and you have to write unbiased answer. If they ask you to write the significance and importance, so you should give more in favor of importance and the significance. And always in writing we should use the words which are simple, which are streamlined, which can give you proper marks. Say UPSC is not a game of your vocabulary, but yes, whatever they ask, the same thing should be there in your answer. The structure of your answer should be good. There should be proper headings, there should be proper points, and whatever words are there, whatever word they ask, say this is a question, what are the salient features of temple architecture in Himalaya? Explain the adequate examples in light of various elements that influence this architectural style. तो अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, सेलिएंट फीचर्स. तो हेडिंग क्या है देखिए, फीचर्स की. तो
तो जिस तरह से वो पूछे वो आपके हेडिंग चलना चाहिए, सब हेडिंग चलना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए. So that's why I always say use the keywords, whatever are there in the question. Draw ample of flowcharts, the schematic charts. Like in civil services values, you can make this chart: integrity, neutrality, professional value, empathy. And while you are giving your answer, only keywords you should underline. You should not underline each and every part. So these are some examples of the flow chart. They will help you to fetch additional marks because they will put your answer a unique answer than others. If you write well, it will leave a unique intellectual footprint in the mind of the paper checker. So he will give you unique marks. And dear friends, I strongly recommend you to write at least 2 answers a day. कम से कम दिन में 2-3 आंसर लिखिए. और जब आपका मेंस आपको लगे पास आ रहा है तो you should give 3 hours full length test. 3 hours full length टेस्ट भी आपको देना है. और जब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ जाए, 10 दिन ही बचे हों, तो आपको आधे से 1 घंटा डेली फिर भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है. प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है और लास्ट में आपको आपका कंक्लूजन देना है. एंड इफ़ इट इज़ यू कैन इनकॉर्पोरेट some of the tips of any administrative reforms committee or the Niti Aayog recommendation, so you should embed that part in your conclusion or way forward. तो जब भी आप उत्तर को ख़त्म करें, समाप्त करें, तो अगर आपको लगता है कि इसमें इनपुट ज़रूरी हैं किसी ARC के या नीति के, तो वो भी आप उसमें डालें. एंड जब भी आप अच्छे से अच्छे आंसर लिखें उनको आप देन यू कंपेयर योर आंसर्स विद द आंसर्स ऑफ द टॉपर्स. तो कंपेयर करें एंड इफ़ यू लर्न सर्टन थिंग्स यू शुड इम्प्रूव फ्रॉम दैट. एंड डियर फ्रेंड्स, इफ यू थिंक दैट सम पार्ट ऑफ योर आंसर इज इवन बेटर देन द टॉपर्स, देन डोंट फॉरगेट टू टैप योर बैक. तो आप अपने आप को भी, अपनी प्रतिभा को भी आप थोड़ा सा आप मोटिवेट करें कि आपने रियली अच्छा किया है. लेकिन जहाँ आपको लगे कि आपको सीखने की ज़रूरत है, यू शुड always be a ready learner. There is no life of learning. And dear friends, I wish you a bright, colorful and successful career. From my side, all the best to you. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.